Hi, welcome everybody. Welcome to session 2 of data structures using C programming. And today's objective is to understand variables, data types, constants, and casting. We will be covering these 4 topics today. ठीक है? So, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज जो हम एड्रेस करेंगे दैट कॉन्सेप्ट इज वेरिएबल. ओके, वेरिएबल क्या होता है? So a variable is a named memory location whose value can change. Okay. So suppose आपके पास एक memory है. You can consider memory like a post office box और जैसे आप कभी आपने लॉकर्स देखे होंगे. ठीक है. लॉकर्स क्या होते हैं? सब सेम साइज के होते हैं. If I show you one example, I'll just quickly go here and show you images of a locker. Okay. लॉकर इमेजेस. लेट्स से हम करते हैं जिम लॉकर इमेजेस. ठीक है, जैसे आप जिम जाते हो तो आपने देखा होगा कि जिम में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकर्स हो सकते हैं. कंसिडरिंग मैं ये ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ. अगर कोई एक वर्टिकल मिल जाता तो और भी अच्छा होता. ठीक है, सपोज आई कंसिडर दिस दिस इमेज. ये ले लेते हैं. ठीक है, सो लेट मी जस्ट कंसिडर दिस इमेज. ओपन इमेज इन अ न्यू टैब. सो अभी अगर आप देखोगे इस इमेज को, सो आप यहां देखो. कंसीडर ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकर्स हैं आपके सामने. लॉकर 1 2 3. ठीक है, इस पूरे सेट ऑफ लॉकर को यू कैन कंसीडर इट एज अ मेमोरी. ठीक है, वी कैन कॉल इट एज, लेट्स से दिस इज अ मेमोरी. एंड व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी? दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, which we generally call as RAM. ठीक है, जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, ये आपकी मेमोरी है ओवरऑल. और दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइजेस ऑफ ब्लॉक्स. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि जो भी आपका फाइल सिस्टम है, दैट फाइल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ओके, जनरली अभी हम विंडोज फाइल सिस्टम में हैं. तो विंडोज फाइल सिस्टम क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज एनटीएफएस फॉर्मेट. ठीक है, since I'm in Windows follows NTFS format. NTFS stands for New Technology File System. New Technology File System. ठीक है, मैं एक रैंडम ले लेता हूं. आई थिंक इसका जो मेमोरी साइज होता है वो होता है 1024 बिट्स. ठीक है, मतलब 1024 बाइट्स आप यूज कर सकते हैं. बट मैं एक अभी ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो एवरी ब्लॉक इज ऑफ लेट्स से 500 बिट्स या 8 बिट मान लेते हैं. लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि 8 बिट्स के ब्लॉक है. ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस साइज इज 8 बिट. ओके, मैंने कहा ये 8 बिट का साइज है. सिमिलरली द नेक्स्ट ब्लॉक इज ऑल्सो 8 बिट. द अनदर वन इज ऑल्सो 8 बिट. Okay, so in memory, all of these till here, all of these would be, let's say, divided into blocks of 8 bits. ठीक है, अब 8 bits क्या हो सकती है? Consider one 8 bit as an 8 bit of binary 1 2 3 4 5 6 7 8. So this could be a minimum value which can be stored. Similarly, on a specific block of 8 bit, the maximum value which you can store is 8 bits of 1 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, so on every block the minimum value which you can store on a block could be all zeros. Let's say on a respective 1 8-bit block, the maximum value which you can store is all ones, or you can store any value between them. ठीक है, you can store any value between them on a memory block. ठीक है, अब अगर मान लो आपको ये चाहिए कि ये जो भी वैल्यूज आपने स्टोर किए हैं, ठीक है, वो वैल्यूज रिपीट मतलब आप रिप्लेस कर सको. ठीक है, अगर आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं तो वी कॉल इट एज अ वेरिएबल. ओके, अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं द कंटेंट ऑफ दैट मेमोरी, यानी ये जो 8 बिट डेटा स्टोर्ड है, अगर हम इसे चाहें चेंज कर सकते हैं. जैसे पहले मैंने नेम एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने पहले नेम स्टोर कर दिया देवांशु.
So Devanshu would have some different types of binary bits, ठीक है, कोई different combination of binary bit होगा. Similarly अगर मैं इसे replace कर देता हूं अश्मिता के नाम से, ठीक है, मेमोरी में, तो मेमोरी में चेंज हो जाएगा और अश्मिता के रेस्पेक्ट में जो बाइनरी बिट्स होंगी वो आके स्टोर हो जाएंगी, ठीक है. सो दैट इज लाइक अ वेरिएबल जो हम मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं. सिमिलरली हम मेमोरी के अंदर कांस्टेंट भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन स्टोर द कांस्टेंट वैल्यू आल्सो एंड वी कैन डिफाइन दैट इट इज अ कांस्टेंट विच कैन नॉट बी चेंज्ड. तो अगर उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ बिट आपने डिफाइन कर दिया तो दैट कैन नॉट चेंज, ठीक है, टिल योर प्रोग्राम इज रनिंग. अब क्या होता है, एक रैम के अंदर देयर कुड बी मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग एट द सेम टाइम. सो एवरी प्रोग्राम विल हैव देयर ओन सेट ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है. कंसीडर ये हो सकता है एक प्रोग्राम वन, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अभी जो अपना प्रोग्राम बनाऊंगा, लेट्स से आई एम गोइंग टू नेम दैट प्रोग्राम एज second.exe, ठीक है. सो दैट second.exe में ऑक्यूपाई सम स्पेस और उस स्पेस के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, and then we can perform operations using these variables and constants, and we can let's say make an output, we can print something. अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे कोड लिख रहे हैं, तो बेसिक लेवल के कोड में सिर्फ तीन चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है. एक्चुअली बड़े प्रोग्राम का भी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वी गिव सर्टेन इनपुट्स, वी डू सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड देन वी अचीव एन आउटपुट, ठीक है. बट उसमें ये होगा कि ठीक है, व्हेन यू राइट लार्जर प्रोग्राम्स इट कुड बी डूइंग डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई मान लो बहुत हाई लेवल मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हो या ओएस लेवल का कोई प्रोसेस लिख रहे हो, तो वो आगे की कहानी है. अभी हम बहुत सिंपल सिंपल प्रोसेसेस लिखेंगे, सिंपल इनपुट्स लेंगे, सिंपल प्रोसेसिंग करेंगे, जैसे लेट्स से मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर दिए, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सो दैट यू हैव अ आइडिया कि कैसे प्रोग्राम चल रहा है. एंड देन वी कैन इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेसेस एज सून एज वी प्रोग्रेस फर्दर, ठीक है. तो ये समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है, एक इक्वल साइज ऑफ लेट्स से ब्लॉक्स, चंक्स ऑफ बिट्स हैं, और वो चंक्स ऑफ बिट्स कलेक्टिवली एक मेमोरी फॉर्म करती है. अगर मैं बोलूं कि मान लो मेरे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, ठीक है. आई एम सेइंग लेट्स से इफ आई हैव 4 GB रैम इन माय कंप्यूटर, दैट 4 GB रैम यूजिंग द फाइल सिस्टम, जो मैंने एनटीएफएस फाइल सिस्टम यूज किया है, वैसे हमारे पास FAT32 फाइल सिस्टम भी होता है, ठीक है, जो लिनक्स में जनरली स्टोरेज डिवाइसेस में एसडी कार्ड्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है. यूनिक्स का अपना फाइल सिस्टम है, वी कॉल इट एज LFS, लिनक्स फाइल सिस्टम, ठीक है. लिनक्स फाइल सिस्टम होता है. इस तरीके के बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हो सकते हैं. बिग डेटा होता है, उसका अलग फाइल सिस्टम होता है, ठीक है. बिग डेटा का एक ब्लॉक 64 GB का होता है, ठीक है. मतलब वन ब्लॉक साइज, जैसे अभी हमने मेमोरी में 8 बिट लिया है, वैसे बिग डेटा सिस्टम्स में इट कुड बी 64 GB, इट कुड बी इवन हायर, ठीक है. सो खैर वो अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है. सो अभी इतना हमें समझ में आ गया कि this 4 GB of data is divided into equal number of blocks, ठीक है. ये पूरा 4 GB हम डिफरेंट सेट ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर फिर हम अपने वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और ये सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है. आई बिलीव थोड़ा आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Okay, so if I get back to what we have to do, so a named memory location whose value can change. तो अब इस मेमोरी के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक लोकेशन के अंदर एक लेट्स से वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर करेंगे, और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने वेरिएबल क्रिएट हुआ है या वैल्यू क्रिएट हुई है, वो वी कैन आइडेंटिफाई एंड सी कि हाउ दैट मेमोरी ब्लॉक इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है. आगे और डिटेल में भी समझेंगे. So why this matters? So programs need named storage for quantities and state. Okay, programs को क्या चाहिए, आपको named storage चाहिए. named storage का मतलब variables, so that आप identify कर सको कि आपने क्या उसमें quantity save कर रखी है या फिर क्या state है. As in इसका मतलब है कि मान लो मैंने एक name variable ले लिया, तो name variable के अंदर मैंने नाम define कर लिया. मान लो मैंने quantity variable ले लिया, तो उसमें मैंने define कर लिया कि let's say if I'm saying कि I have bought 1 unit of let's say I'm using a mobile app, okay, and suppose I'm saying I have bought 1 unit of let's say bread, 1 unit of butter,
and 2 units of milk, suppose. So where would we save this quantity? We will save these quantities in a variable. Okay. Similarly, state हो सकती है. Let's say have the user paid or not paid. क्योंकि कार्ट में आइटम ऐड कर दिया बट पे नहीं किया, तो द स्टेट कुड बी फॉल्स. ओके. Similarly, if the user has paid, the state could be true. So we can have all those values and quantities and states. Similarly, next क्या है हमारे पास, how will we use it? So we are going to store item quantity. आज के कोड में हम लिखेंगे आइटम क्वांटिटी यूज करेंगे. एम्प्लॉय आईडी हम नहीं यूज करेंगे, आज हम प्राइस यूज करेंगे. ठीक है. विल यूज अ वेरिएबल प्राइस. रिस्क क्या हो सकते हैं? सो व्हेन यू विल टाइप सच प्रोग्राम्स, देयर कुड बी सर्टेन रिस्क लाइक रॉन्ग टाइप. हो सकता है कि आप क्वांटिटी डिफाइन करो बट आप उसको गलत डेटा टाइप दे दो, ऐसी गलती हो सकती है. ठीक है. और यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल विथ एन अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू. ठीक है. एंड दैट अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू कैन क्रिएट नॉनसेंस रिजल्ट्स. Okay, that is possible. So we have to initialize the variable and we have to define the correct data type of the variable, and then we have to store the value in order to protect ourselves from any risk or any mistakes we do in the code. ठीक है. So हम क्या करेंगे? We will initialize variables. आज हम देखेंगे कि variables कैसे initialize करते हैं. ठीक है. आज हम टेस्ट नहीं करेंगे but only we will initialize and we will see how that works. Okay. Now there are 4 different types of variables. 4 different types of data types. Okay. So what kind of data types are available? We have integer. Okay. What integers do? Integer stores whole numbers. Okay. So we have an integer, and integer stores whole numbers. We will do that. Second type of data type is float. What float? There are float and double. You can use both. Okay. So float and double, these store decimals. So in case if you have a number which has decimals in it, and if you want to save that value into a variable, then you will create that variable with the float data type or double data type. Okay. Then the next what you have is character. So character stores one character. जैसे मान लो मैंने एक कैरेक्टर डिफाइन किया डी. डी स्टैंड्स फॉर लेट्स से देवांशु शुक्ला. ठीक है. अब मान लो मुझे देवांशु शुक्ला स्टोर करना है, तो अगर मैंने कैरेक्टर इनिशियलाइज किया तो आई कैन स्टोर ओनली वन वेरिएबल. लेट्स से इट कुड बी डी. ठीक है. अगर मुझे पूरा नाम स्टोर करना है तो आई नीड अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है. सो आगे हम उसे एरेज, हम एरेज यूज करते हैं. कैरेक्टर एरेज आप यूज कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स आप डाल सकते हैं. ठीक है. तो आगे हम देखेंगे. सो वन टाइप ऑफ स्टोरेज इन सी इज कैरेक्टर. ठीक है. अब जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, उसमें कैरेक्टर्स नहीं होते हैं. पहले सी जब यूज होती थी तो इट यूज टू बिल्ड एरेज, और एरेज के अंदर फिर हम कैरेक्टर्स को स्टोर करते थे और तब हम एक पूरा स्ट्रिंग सेव कर पाते थे. बट अब जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दे हैव द स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड ऑल. ठीक है. सो करेक्ट टाइप्स इंप्रूव एक्यूरेसी एंड मेमोरी यूज. ठीक है. So what is the advantage? One advantage of using these clear data types is the correct types improve accuracy. ठीक है. Accuracy of storing correct data into correct variables. Okay. इसकी वजह से we get a lot of help. नहीं तो क्या होगा, आप लिखोगे नेम, सेव कर दोगे नंबर. ठीक है. So it will cause a lot of confusion. So with correct data types, you can store correct values in those variables or constants. Okay. So that is what is important. There are certain risks, but that we will be taking up, when we progress further. The next part is constants. Okay. Constant क्या होते हैं? Constant marks a value that should not be changed. Okay. So apart from variables, you have constants also, and the value of constant will not change in the program. Okay. Once you have defined a constant and once you have added a value in it, it will not change till the program is running, and it can only be modified if you write the code again, or if you modify the value in the code, only then that value can be changed. Okay. So suppose you have certain fixed rules, or let's say you have a fixed threshold that you want to take a decision on the basis of a threshold value. So that threshold value could be a constant, and that constant you can define in your program. Okay.
So the objective of constant is to prevent any accidental modification during the running of the program. Okay. तो जैसे आपने constant define कर दिया, the computer knows that this memory address has a constant in it, and I cannot override that value. I cannot change that value till that program is running. So that is important. Similarly, in a project, let's say we use a maximum record count, or suppose, let's say we have to calculate GST. GST is 18%, suppose, okay, for a business. So that is a constant tax rate. So I can define that tax rate as 18% GST, and then we can do all our calculations on the basis of that respective tax rate. Okay. So these can be, taken as constants. Then we have one more feature, which is typecasting. Typecasting means you can convert one type into another. Suppose you have a integer value. Suppose you have a float value, okay? And suppose you were calculating the percentage of a student, okay? Now you got to see that, okay, the student scored 99 point, let's say the student scored 92.764%, okay? You got some value like that, okay? So I'll write it here. Suppose a student scored 92.67%, okay? So by default, or let's say 92.67 is a decimal number, and we will be storing it into float, okay? But we have a facility that we can convert this float value into integer using typecasting. And when we convert that into integer, it could become, let's say, 93 if I'm handling rounding also, okay? So I can treat it as, instead of 92.67, I can treat it as an integer value. I can convert that. Sometimes in the program, we do need to use it, and you will get to know how we utilize such cases, okay, as soon as we progress further. So typecasting means convert one type into other, okay? You have a value, you have a data type, you know that data type is, let's say, float, and then you are typecasting, which means you are converting that float to integer, okay? Which means you are converting one type into another type. That is known as typecasting, okay? There are various ways why it matters. So it prevents accidental integer, only arithmetic cases. Let's say there are certain cases where we do need to have a whole number, okay, in order to process. There might be some equation where we have to apply these values and we have to get an outcome. And probably on that formula, a constant is taken, and you mistakenly took float. And when you put float with the decimal, the output might change, okay? So in order to keep it protected, before we supply the values to that formula, we will typecast all values into integer, and then we can pass the values so as to get the correct outcome, okay? So let's say in the project, we will be using, like, we'll calculate average stock value, okay? We're going to calculate average stock value, and let's say this average stock value may require converting integer totals before division. So before we do any kind of division which gives us a float result, we have to convert that decision into integer in order to save that into a average stock value, okay? So this is one example which we will be taking now. So I believe you got a fair idea of the four concepts which we will be implementing. The first one is variables, second is data types, constants, and casting. ये चार चीजें आज हम कर रहे हैं. वेरिएबल्स इंप्लीमेंट करेंगे, डेटा टाइप्स इंप्लीमेंट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स इंप्लीमेंट करेंगे, और कास्टिंग इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है. सो हियर इज द कोड विच वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट टुडे. ठीक है. तो कोड में हम क्या करने वाले हैं? The very first part is we are going to include standard input output, and this standard input output is the header file which we are going to import. So now let's get started with the code as well. So I am here in my I've started MSys2, and from that MSys2 I have switched to C users, home documents, GitHub, data structures using C. This is my repository on my local machine where we are maintaining the code, okay? And here you can see in the GitHub repo, we already have the first program.c and first.exe, which we exported in the previous session. So we'll maintain all our code here, okay?
So now we are going to make another program, and let's say I'm going to call this program as second.c. Okay, I'm using nano text editor and I am making a program with the name second.c. Okay, so let's get started. So we are going to use hash include. Okay, and we're going to import stdio.h. This is the header file, okay, which we will be using. So this is the standard input output header file which we have used. Okay, so this part we have implemented. Okay, included standard input output .io. Okay, what next we have? Next, we are going to define a function, and you know that the very first function or the entry point of the program is main. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर कहां से हमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे पता चलता है? वो एक मेन नाम के फंक्शन को ढूंढता है आपके कोड के अंदर कि मेन नाम का फंक्शन कहां डिफाइंड है, किस मेमोरी ब्लॉक पे डिफाइंड है, वो वहां जाता है और उस मेन फंक्शन के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस वहां से एग्जीक्यूशन करना शुरू करता है. ठीक है, तो सीपीयू आइडेंटिफाइज दिस मेन फंक्शन कि मेन कहां पे है और मेन के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमें एग्जीक्यूट करने हैं. तो हम क्या करेंगे, हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, द रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेन फंक्शन इज इंटीजर. ओके, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम लास्ट में एक कोड रिटर्न करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और उसको हम बोलते हैं रिटर्न जीरो. ठीक है, यानी जैसे ही प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, जिससे सीपीयू को ये पता चल जाएगा कि ठीक है प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अगर रिटर्न जीरो की जगह मान लो कोई एरर कोड आ जाता है तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ठीक है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो गया है एंड कोई एरर आ गया है एंड दैट एरर कोड इज रिटर्न. तो अब हम उस एरर कोड को फिर फिक्स करेंगे और अपने प्रोग्राम को फिक्स करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो आई थिंक यू आर क्लियर दैट दिस इज द रिटर्न टाइप. ठीक है, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. सो दिस इज द रिटर्न टाइप and type stands for return data type and this is integer. Okay, int stands for integer. integer हम रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, and main is the entry point of the program. ठीक है, and void means empty, null. We are going to give no inputs to this main function for execution. ठीक है, कोई इनपुट्स की इसको जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन करने के लिए. अगर यहां से हम void हटा देते हैं और void की जगह बाई चांस मान लो हम कुछ पैरामीटर्स दे दें तो प्रोग्राम को रन करने से पहले वो पैरामीटर्स हमें देने पड़ेंगे सिस्टम को, सीपीयू को, तब जाके वो उसे रन कर पाएगा. ठीक है, तो कहीं ऐसे ब्लॉकेजेस ना आए इसलिए हम void यूज करते हैं. ठीक है, void का मतलब सीपीयू नीड्स नो आर्ग्यूमेंट्स टू रन दिस मेन फंक्शन. सो दिस मेन फंक्शन कैन बी रन ऑटोमेटिकली. ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम मेमोरी में गया वहां से सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस उठाए, मेन को ढूंढेगा और लाइन बाय लाइन सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा और फाइनली लास्ट में वेट करेगा व्हाट इज द रिटर्न टाइप. ठीक है, एंड रिटर्न टाइप वुड बी इंटीजर. नाउ सो मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं. सो अब हमने मेन फंक्शन कैसे डिफाइन किया, मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं. सो वी वर हियर. नाउ व्हाट वी विल डू, आई एम गोइंग टू डिफाइन एन इंटीजर मेन फंक्शन. ओके, this will be my main function. मैंने main function define कर दिया and there will be no arguments and the return type will be zero. Okay, so अब मेरी C program की body ready हो गई. मैंने header include कर लिया, header के अंदर सारे functions हैं defined. जैसे हम कौन सा function use करेंगे, हम printf function use करेंगे. तो printf function के लिए हमारे पास standard input output library है and we can use that function now. ठीक है, एंड फिर हमने अपना मेन फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इट नीड्स नो आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए हमने void डिफाइन कर दिया फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन. एंड जैसे ही सारी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी लास्ट में वी विल रिटर्न जीरो, जिससे कि हमें यह पता लग जाएगा कि द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुल. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सो नाउ द प्रोग्राम स्टार्ट्स. ठीक है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. सो इसमें जो भी मैंने कमेंट्स डाले हुए हैं कोड में, द बॉटम कमेंट इज फॉर द अपर स्टेटमेंट. ठीक है, सो इफ यू आर रेफरिंग
द डॉक्यूमेंटेशन, उससे आपको पता लग जाएगा कि जो कमेंट है वो आफ्टर द एक्चुअल कोड स्टेटमेंट है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम सी प्रोग्रामिंग में फॉरवर्ड स्लैशेस, डबल बैक स्लैशेस यूज करके, दीज आर द बैक स्लैशेस, डबल बैक स्लैशेस को हम यूज करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव दिस फैसिलिटी नाउ। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू डिफाइन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं CONST, सो दिस स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट विच वी डिस्कस्ड कि हमें कांस्टेंट डिफाइन करना है, ठीक है। सो वी आर टेकिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद हमने डिफाइन कर दिया डेटा टाइप, दैट द डेटा टाइप ऑफ दिस कांस्टेंट वुड बी इंटीजर। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको कोई कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए एक एक्सट्रैक्ट कीवर्ड है, जिससे कि सीपीयू को पता लग जाए, या मेमोरी, सीपीयू को पता लग जाए कि ठीक है, दिस मेमोरी एरिया कंटेन्स अ कांस्टेंट एंड दिस कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ओके, देन यू हैव रिटन एंड दिस इज द नेम, ठीक है। ये नेम है, दिस नेम कुड बी एनीथिंग। और अभी हमने एक सैंपल लिया है मैक्सिमम रिकॉर्ड्स, ठीक है। और मैक्सिमम रिकॉर्ड्स के अंदर दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, we call this as assignment operator. I'll write it here, assignment operator, which means we are assigning a value to a variable or a constant, okay. So this is an assignment operator, okay. This is an assignment operator now, and this assignment operator means we are assigning a value, okay. So let's say on the left hand side there could be a constant or there could be a variable, then we have an assignment operator, and then we have a value. So this is the format, and then we have the execution operator, okay. So what are we doing here, we are assigning the value 1000 into this variable maximum records, which is of integer type, and it is a constant, okay. So we read language from right to left. We read code from right to left, ठीक है। जब भी आपको कोड रीड करना है प्रॉपरली, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड हाउ द सीपीयू इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, तो सीपीयू हमेशा राइट टू लेफ्ट रीड करता है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट से आप रीड करना शुरू करोगे एंड फाइनली द वैल्यू वुड गेट स्टोर्ड इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। नाउ एंड सेम गोज फर्दर, आगे जो भी हम क्रिएट करेंगे उसके ऊपर हम ये करेंगे, तो ठीक है। तो हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ माय ऑब्जेक्टिव इज टू डिफाइन a constant with the name max records which is of integer type. So हम क्या करेंगे, we are going to define a constant, okay. So हमने क्या किया, हमने constant ले लिया, this constant is integer, ठीक है, integer is the data type. I took as maximum number of records, let's say possible, and then I assign one value to it, okay. So I've got a constant ready, okay. I have created one constant in the program, okay. What next we have, so what this constant is doing, it is storing a fixed capacity rule that must not change, okay. So this constant will not change throughout the program. What next, now I need to store a whole number, okay, and this whole number would define an inventory quantity, and this is just a random quantity which we are taking. Let's say we are taking quantity as 5, okay. This is just random. So what do we need, we need to have a name of a variable, we need to have the data type of the variable, and we have to assign a value to that variable, okay, using the assignment operator. So what I said that I need to define a quantity, okay, and this quantity would be a variable, and this will be of integer data type. So I took an integer data type और मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया क्वांटिटी नाम का, और क्वांटिटी को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 5, ठीक है। ये बन गया मेरा वेरिएबल, ठीक है, ये बन गया मेरा वेरिएबल, ये था मेरा कांस्टेंट, ठीक है। मैं साथ में कमेंट्स भी करता जा रहा हूं सो दैट यू आर अवेयर कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मुझे चाहिए आई एम गोइंग टू स्टोर अ प्राइस विथ फ्रैक्शनल प्रेसिशन, यानी अब मैं एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। So the decimal value is let's say 2249.50. आप देखोगे यहाँ वैल्यू में डेसिमल है, तो इसको मुझे सेव करना है,
और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट प्राइस, ठीक है। सो द वेरिएबल विच आई एम टेकिंग इट इज यूनिट प्राइस एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज डबल, ठीक है, इट इज डबल। सो हमने क्या किया, हमने एक डबल डेटा टाइप क्रिएट किया, वी कॉल्ड इट एज यूनिट प्राइस and let's say the unit price is 249.50, okay, and this is a float variable, this is a float variable which I took, okay. Then what I'll do, then I'm going to store one classification character. I told you that we have another data type which is of character type. So मान लो मैं एक कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल ए, एंड कैरेक्टर्स आर डिफाइंड विथ दीज कोड्स, ठीक है, आप देख सकते हो, आप कैरेक्टर को कोड्स के थ्रू आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सिंगल कोड्स, ठीक है, सिंगल कोड्स यूज कर सकते हैं आप। सो हमने क्या डिफाइन किया, ग्रेड, ये एक रैंडम हमने एग्जांपल लिया है कि जैसे मान लो ए ग्रेड है, ए ग्रेड को मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया विद द नेम ग्रेड, और मैंने उसको स्टोर कर दिया इन कैरेक्टर डेटा टाइप, ओके। So let's do that. So the next one which you are creating is, I want a character and the character is known as the grade and I have stored a character in it. Okay, and this is character variable. This is a character variable which we created. ठीक है, तो आपको ये दिख गया कि आपने एक हेडर फाइल बनाई, एक मेन फंक्शन की बॉडी बनाई, उस मेन फंक्शन के अंदर आपने कांस्टेंट, वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल और कैरेक्टर वेरिएबल चारों क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू मेक सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, आई वुड वॉन्ट टू प्रोसेस समथिंग। सो मैंने बोला कि मैंने एक वैल्यू ली कि ठीक है, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द स्टॉक वैल्यू, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मुझे स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो आई टेक स्टॉक वैल्यू एज अ वेरिएबल। स्टॉक वैल्यू क्या स्टोर करेगा, आई डू क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, ठीक है, जितना नंबर ऑफ यूनिट प्राइस है और कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा मेरी दुकान में कितना सामान है। तो व्हाट इज द स्टॉक वैल्यू इन माय शॉप, लेट्स से, सो आई हैव द यूनिट प्राइस 249.5, आई विल मल्टीप्लाई दैट विद 5 क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या होता है सी के अंदर, आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि क्योंकि क्वांटिटी था मेरा इंटीजर, यूनिट प्राइस है मेरा फ्लोट डबल, तो मेरे को इसको टाइप कास्ट करना पड़ा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे टाइप कास्ट किया, पहले मैंने इंटीजर को डबल में कन्वर्ट किया विद दिस टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग में क्या होता है, टाइप कास्टिंग में आप आपके वेरिएबल से पहले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना डेटा टाइप डिफाइन कर दो। सो सपोज क्वांटिटी वाज इंटीजर पहले, नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू डबल, ठीक है। सो जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, यू कैन डिफाइन इट एज अ टाइप कास्टेड वैल्यू, ओके, दैट वी कैन डू। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो अब ये भी डबल हो गया, ये डबल था ही, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हमने स्टॉक वैल्यू में स्टोर कर दिया, और इसका जो आउटकम आया वो आया डबल, ठीक है। लेट्स डू दैट। सो लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट हमने क्या किया, नाउ आई वांटेड, ठीक है, let's say I said कि you take the quantity, how much quantity you have, I have 5 quantity, I want to multiply that with unit price so as to calculate the overall stock value, but since this would be in decimals, value decimals में आएगी, इसलिए मैंने इसको डबल में कन्वर्ट कर दिया क्वांटिटी को, ठीक है। क्वांटिटी को डबल में कन्वर्ट करने के बाद आई वुड वांट टू सेव दैट इनटू अ वेरिएबल नोन एज स्टॉक वैल्यू, ठीक है, मैंने इसको स्टॉक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एंड द डेटा टाइप ऑफ स्टॉक वैल्यू वुड बी डबल, ओके। सो दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द प्रोसेस व्हिच आई हैव डन, ओके। सो आई हैव गॉट द स्टॉक वैल्यू। फाइनली व्हाट एम आई गोइंग टू डू, so I convert quantity explicitly and calculated total value, this I have already done. Now what am I going to do, I'm going to format all values using matching conversion specifiers, okay। इसका मतलब क्या है, मैं print, now I'm going to call all of these values and I want to display them on the output screen, okay। So उसके लिए हम क्या करेंगे, I'm going to define the maximum value, percentage D stands for the data type, so percentage D stands for double,
quantity is also double, so this stands for double. This is float, price is float up to 2 decimal points. Grade is constant, so we use percentage C, and value is %2f again. Okay, so हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल, हम इन स्ट्रिंग्स या इन वैल्यूज के साथ, सो वी विल फेच दीज वैल्यूज. जैसे हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, वी विल प्रिंट मैक्स रिकॉर्ड्स, दिस इज योर कांस्टेंट. वी विल प्रिंट द क्वांटिटी विच वाज योर वेरिएबल. वी विल प्रिंट द यूनिट प्राइस विच वी नो. वी विल प्रिंट द ग्रेड एंड वी विल प्रिंट द स्टॉक वैल्यू. ये सारी वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है. ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज आर ऑफ अ क्लियर डेटा टाइप. ठीक है, अब जैसे मैक्स रिकॉर्ड है, मैक्स रिकॉर्ड क्या है, मैक्स रिकॉर्ड आपका कांस्टेंट है. ठीक है, मैक्स रिकॉर्ड तो आई थिंक हम इसमें हाँ प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, मैक्स रिकॉर्ड हमारा कांस्टेंट है. ठीक है, तो यहां पे हमने %d यूज कर लिया. %d इज फॉर इंटीजर्स. ओके, आई डिफाइन इट हियर. सो मैं लिखूंगा दीज आर द प्लेस होल्डर्स. ठीक है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेस होल्डर्स. आप इसे प्लेस होल्डर्स कह सकते हो, और प्लेस होल्डर्स एंड द एक्चुअल डेटा टाइप. ठीक है, या मैं ऐसा लिखता हूं कि लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेटा टाइप एंड राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे प्लेस होल्डर्स. ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव, लेट्स से आई हैव एन इंटीजर डेटा टाइप. द प्लेस होल्डर फॉर इंटीजर डेटा टाइप इज %d. %d बोलते हैं. ठीक है, अगर मुझे, मेरे पास मान लो कोई एक इंटीजर वेरिएबल है, उसको मुझे एक स्ट्रिंग के अंदर, अगर मतलब एक आउटपुट के अंदर अगर मुझे उसे दिखाना है, तो मुझे प्लेस होल्डर अप्रोप्रिएट लगाना पड़ेगा. अगर मैंने %d की जगह कोई और प्लेस होल्डर गलती से लिख दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू टाइप अलग चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो इंटीजर का जो रेस्पेक्टिव प्लेस होल्डर होता है वो होता है %d. सिमिलरली फ्लोट का या डबल का जो इंटीजर रिप्लेसमेंट होता है वो होता है %f. इट इज %f. ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगा %.2f. ठीक है, अगर बाय चांस मुझे चाहिए अप टू 3 डेसिमल पोजीशंस तो मैं लिखूंगा %.3f. इस तरीके से मैं लिखूंगा. ठीक है, आई राइट इट लाइक दिस. So this is for float. Similarly, you have a character data type. Character के लिए आप लिखोगे %c. %c is for character placeholders. ठीक है, that this is it. So this is the table which you are following. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, हमने क्या किया, हम एक ये आउटकम हमें प्रिंट करना है. एक हमारी स्ट्रिंग डिफाइंड है. ठीक है, और स्ट्रिंग के साथ में हमें वैल्यू प्लेस करनी है. ठीक है, अब वैल्यू क्या प्लेस करूंगा, मैं मैक्सिमम रिकॉर्ड्स वैल्यू प्लेस करूंगा यहां पे मैक्स के साथ. तो मैक्सिमम रिकॉर्ड्स किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है. तो इंटीजर का प्लेस होल्डर क्या है, %d, इसलिए यहां पे %d लिखा हुआ है. सो दिस वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एट %d. ठीक है, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम रिकॉर्ड्स की, दिस कैन गो एंड गेट सेव्ड हियर. सिमिलरली इन द आउटपुट में क्वांटिटी प्रिंट करना चाहता हूं. मेरे पास जो क्वांटिटी का एक्चुअल वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है, दिस इज ऑफ इंटीजर टाइप. तो हाउ कैन आई पेस्ट, आई नीड अ %d प्लेस होल्डर. सिमिलरली जैसे मैं अपने स्ट्रिंग में प्राइस प्रिंट करना चाहता हूं, प्राइस इज अ स्ट्रिंग, मतलब मैं एक तरीके से दिखा रहा हूं यूजर को कि प्राइस आपका इतना है, तो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग प्राइस, और उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, यूनिट प्राइस की आएगी. ठीक है, यूनिट प्राइस is of double type or float type. That is why I need a %f. और मैं क्या करूंगा, up to 2 decimal points इसको मुझे दिखाना है, इसलिए I'm using %2f. Okay, so it will show me unit price like 249.50, 51, 58, whatever it is. It will not show 589. ऐसा नहीं आएगा, 3 decimal places तक नहीं आएगा. ठीक है, 2 decimal places तक आउटकम आएगा. सिमिलरली अगला जो मैं दिखाना चाहता हूं, ग्रेड दिखाना चाहता हूं. ठीक है, ग्रेड का जो एक्चुअल वेरिएबल है दैट इज ग्रेड. ठीक है, एंड दिस इज ऑफ कैरेक्टर, सो आई यूज %c. सो फॉर कैरेक्टर द प्लेस होल्डर इज %c. सो वी टाइप %c, तो ये वैल्यू आके %c के अंदर हम सेव कर सकते हैं. ठीक है, सो एक तरीके से हम दिखा रहे हैं कि ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग
and I would want to put a value here, and I can, instead of defining the variable, I can only define the data, I can only define the type of placeholder, what type of value will come here, and then using comma separated values हम वो variables pass करते हैं. और फाइनली है आपके पास स्टॉक वैल्यू. ठीक है, तो स्टॉक वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज ऑल्सो डबल, सो आई नीड परसेंटेज एफ, बट मैं अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक दिखाऊंगा, इसलिए 0.2f हम यूज कर रहे हैं. एंड फाइनली वी विल अटैच वन न्यू लाइन कैरेक्टर. ठीक है, सो दैट कि जो भी स्टेटमेंट आएगा उसके बाद न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा. तो कोई भी अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट आनी, इट विल कम ऑन अ न्यू लाइन. सो दिस इज स्लैश एन. ये होता है न्यू लाइन कम्स विथ स्लैश एन. दिस इज न्यू लाइन कैरेक्टर. जैसे आप ये पास कर दोगे, आपके जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो नए लाइन पे आ जाएंगे. न्यू लाइन कैरेक्टर. ओके, सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, वी वांट टू डू, वी वांट टू सप्लाई वैल्यूज इन द सेम ऑर्डर एज द फॉर्मेट स्ट्रिंग. ठीक है, तो हम सी में क्या कर रहे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट करेंगे ऑन द स्क्रीन all of these values right from here to here. So your first value will contain this string. ठीक है, this is one single string. अगर आप इसको देखोगे, if I just use a block here, so this is your string. इतना. ठीक है, this is your string. This is one single value. एक पूरा सिंगल वैल्यू हो गया अब ये. ठीक है, मैक्स से शुरू होगा, स्ट्रिंग आएगी मैक्स, उसके साथ में वेरिएबल अटैच कर दिया. स्ट्रिंग आएगी क्वांटिटी, उसके साथ वेरिएबल अटैच कर दिया. स्ट्रिंग आएगा प्राइस, उसके साथ वेरिएबल अटैच कर दिया. ठीक है, स्ट्रिंग आएगा ग्रेड, उसके साथ वेरिएबल अटैच कर दिया. फिर स्ट्रिंग आएगा वैल्यू, उसके साथ वेरिएबल अटैच कर दिया और न्यू लाइन दिखा दी. ठीक है, अब वेरिएबल्स कौन से जाएंगे, सो कॉमा सेपरेटेड जो सीक्वेंस है, पहले मैक्स का, फिर क्वांटिटी का, फिर प्राइस का, फिर ग्रेड का, फिर वैल्यू का, इसी सेम ऑर्डर में हमें वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं. तो हमने क्या डिफाइन किया, मैक्स रिकॉर्ड, जो भी उसका रेस्पेक्टिव वैल्यू हम प्रिंट करना चाहते हैं. जैसे क्यूटीवाई में हम क्वांटिटी प्रिंट करेंगे, प्राइस में हम यूनिट प्राइस प्रिंट करेंगे, ग्रेड में हम ग्रेड का वैल्यू प्रिंट करेंगे, और फाइनली वैल्यू में हम स्टॉक वैल्यू प्रिंट करेंगे. सो दिस विल फाइनली गिव अस द आउटपुट ऑन स्क्रीन ऑफ ऑल दीज इंटीजर वेरिएबल्स विच वी यूज्ड. ठीक है, सो लेट्स राइट दैट. अब इसको लिखते हैं. So this is the final statement which we would want to write here. Okay, and what this final statement is. Okay, so I wanted to do print. मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूं. ठीक है, स्टेटमेंट में मैं क्या प्रिंट करूंगा, लेट्स से मैंने एक डबल कोट से स्ट्रिंग बना लिया. ठीक है, दिस इज द स्ट्रिंग विच आई वुड वांट टू प्रिंट. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसी सीक्वेंस में हम करेंगे जिस सीक्वेंस में हमारा कोड डिफाइंड है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट मैक्स रिकॉर्ड्स. दिस इज माय फर्स्ट वैल्यू व्हिच आई वांट टू प्रिंट. देन आई वांट टू प्रिंट क्वांटिटी, देन आई वांट टू प्रिंट यूनिट प्राइस, देन आई वांट टू प्रिंट ग्रेड, एंड देन आई वांट टू प्रिंट स्टॉक वैल्यू. ये जो 5 वैल्यूज हमारे पास डिफाइंड हैं, आई वांट टू प्रिंट दीज 5. ओके, so let's say, and I can use short form for this or I can use actual names also. ठीक है, let's say मैंने कहा max records. मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया कि I want max records. ठीक है, so how many max records you have? ठीक है, how many max records you have? Let's say अब max records का वैल्यू चाहिए मुझे. ठीक है, तो max records is of integer type. ठीक है, the max record is of integer type. ठीक है, तो integer type में मुझे क्या देना पड़ेगा, परसेंटेज d. ओके, ठीक है, एंड व्हाट आई नीड इज कॉमा सेपरेट करने के बाद आई वांट दिस वेरिएबल विच यू वांट टू प्रिंट इनसाइड द स्ट्रिंग. ठीक है, अगर मैं ऐसे सिंगल लिखता हूं तो एक वैल्यू प्लेस हो जाए. ठीक है, नाउ यू सेड कि नहीं सर मुझे तो क्वांटिटी भी दिखानी है, आई वांट क्वांटिटी आल्सो. सो मैंने लिख दिया कि ठीक है चलो लेट्स शो क्वांटिटी आल्सो. नाउ यू सी क्वांटिटी इज ऑफ इंटीजर टाइप, सो अगेन विल यूज परसेंटेज डी एंड वी विल ऐड अनदर वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है, सो दिस QTY which you are observing here, this is the string.
और इस स्ट्रिंग के साथ में एक वेरिएबल वैल्यू प्लेस हो जाएगी। वो वेरिएबल वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी और वेरिएबल कौन सा होगा, क्वांटिटी वेरिएबल होगा, और क्वांटिटी वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू है तो वो यहां पे साथ में प्रिंट हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली यू सेड कि नहीं मुझे तो यूनिट प्राइस भी देखना है। ठीक है, तो मैंने कहा ओके। आपने बोला कि मुझे यूनिट प्राइस भी चाहिए सर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसको सेपरेटर्स लगा देते हैं इस तरीके से, मान लो हम सेपरेटर्स भी यूज कर लेते हैं। ओके, मैक्स रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर क्वांटिटी आ जाएगा, फिर यूनिट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सो यू सेड कि आई वांट टू सी यूनिट प्राइस आल्सो। यूनिट प्राइस इज डबल, so I should use percentage f. Okay, but I need up to 2 decimal positions, so I can use 0.2. This 0.2 stands for will get the variable value up to 2 decimal places only. Okay, so what would be next after quantity? I have unit underscore price. Okay, I have unit underscore price. Let's say I just put them into new line. ठीक है, न्यू लाइन में अभी हम इसको ले रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपने बोला कि यूनिट प्राइस के साथ तो सर मुझे ग्रेड भी चाहिए, आई वांट टू शो ग्रेड आल्सो। सो आई टुक अ स्ट्रिंग ग्रेड, मैंने ऐसे डिफाइन कर लिया ग्रेड और ग्रेडिंग, यू कैन डिफाइन एनीथिंग एज पर योर चॉइस, जैसा आप यूजर को आउटपुट दिखाना चाहते हैं। सो वॉट एवर यू वांट टू शो टू द यूजर, सो दैट यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल कीवर्ड हो। ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ग्रेडिंग, व्हाट इज द ग्रेडिंग। ठीक है, एंड एज यू नो दैट ग्रेड इज अ कैरेक्टर। ठीक है, so for character we use percentage c. Percentage c is for the character. Okay, that this placeholder will get a variable, will get a value from the variable which is of character type. ठीक है, so I'm going to define that variable also from where we have to get the value. So I said get the value from grade. Okay, and grade is this variable. Okay, then you said sir I want to see stock value also. So I said okay, let's get stock value also. So you said, please show me stock value as well. Okay, so we have gone to stock value. Now what is stock value? Stock value is of double type. Okay, so for double again you need percentage dot 2f. Okay, now so that is how we are going to get this complete string. Okay, let me just reduce the size a bit so that you can see that. Okay, so now you see we got max records, we got quantity, we got unit price, we got grading, we got stock value. Okay, so this is user defined text. Then we have the placeholders where we would want to put the values. Okay, and from where we are going to get these values, we are going to get these values from their respective variables. So for position 1, I'll get the value from max records variable. For 2, I'm going to get it from quantity. For 3, I'm going to get it from unit price variable. For 4, I'm going to get it from grade variable. And the 5th one is stock value. Okay, so this I'm going to get from the variable stock value. This is from this variable. Okay, clear? So all your variables are defined in the same order, in which you want them to be printed. Okay, now and finally we'll use execution operator. Okay, so I'm going to put everything on a same line, though you can define it on multiple lines also, but I don't want to do it for now. And finally we have a return statement. So this is our first program. हमने header define किया, हमने एक integer main function define किया था body, जिसके अंदर के सारे instructions execute होंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव था टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कैरेक्टर्स। वो हमने चारों ले लिए। फिर हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया क्योंकि हमें टाइप कास्टिंग भी देखनी थी, तो हमने टाइप कास्ट किया, वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया और फाइनली हमने उसको एक वेरिएबल में सेव किया विच इज स्टॉक वैल्यू। देन हमने क्लीन आउटकम डिस्प्ले किया विच वी वांट द यूजर टू सी as an outcome of this program. Okay, so we got input variables. अगर आप यहां तक देखेंगे, these are the input variables जो अभी हमने दिए हैं। अभी हमने हार्ड कोड किया है, बाद में ऐसा होगा कि हम यूजर से इनपुट्स लेंगे। ठीक है, as soon as we progress further.
So this is the input part. Then what you did with the input, you processed that input. Okay, this is the processing part that you converted, multiplied and converted those values and finally got a stock value. And this is the output of your program. This is the output of your program which you want the user to see. Okay. Now, so I'm going to use Control O to save the program, second.c. I'm going to close it with Control X. And I'm going to use GCC to use this second.c. And I'm going to make an output with the name second.exe. Okay. I'm going to compile GCC second.c and I'm going to export it to an output second.exe. And finally, we got a second.exe program running. Okay. Second.exe हमारे पास run हो गया. एक काम और कर सकते हैं. Nano, let's get into second.c for a moment. Second.c. इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं. Get character. ठीक है. So I'm going to include console input output.h. This is the header file. And this header file I'm using for get character function. Okay, for the get character function. Okay. And I'm going to use get character at the end. So let's say I will use /n here. So after this new line, I'll get a new line. Okay. Or finally, मैं क्या करूँगा? I'm going to use get character so that I can easily run it and wait. This program will wait until we give a character. So it will open on a new window. It will wait until we give a character. जैसे हम character देंगे, then the program terminates and a return 0 will be successfully given back to the program. ठीक है. Control X किया हमने and let's compile the program. I'm going to clear the screen. I'm going to compile with GCC second.c. Export to output, -o stands for output. Export to second.exe. Okay, so now the program is compiled. So अब हम चलते हैं on our programs folder, documents, GitHub, data structures using C, and I've got this program second.exe. Okay, run किया हमने इसे second.exe. So now you see you're getting this output. Okay, so what you're getting in return, you're getting max records, which is 1000. You're getting quantity as 5. You're getting unit price as 249.5. You're getting grading as A, and you're getting stock value as 1247.5 after multiplication of 249.50 with 5. And since you have used new line character, तो अब आप देख रहे हो कि जो get character चाहता है वो अगले line पे automatically shift हो गया है. ठीक है. जैसे आपने हेलो वर्ल्ड देखा था तो यहीं पे कर्सर मूव कर रहा था क्योंकि हमने कोई न्यू लाइन कैरेक्टर तो दिया नहीं था. अब हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है तो ऑटोमेटिकली जैसे कंसोल ने प्रिंट किया it shifted the cursor to the next line. Okay, so this is what is the outcome of this particular program. Okay, so I'm going to give a character and the program will close. So this is what we have implemented in our program. So successfully we have executed. We understood what are variables, what are different types of data types, constants, and casting. So we'll keep it up till here in this session. In the next session, we will learn the following concepts: input, output, and safe text entry. So today we have given all the input and the variables. In the next session, we will take these inputs, let's say from users, okay? And the user is going to give an input. We are going to process that. We are going to export an output, and we will ensure how a user will enter safe text so that there is no error, and how the program is going to take it and read it. This is what we are going to cover in the next session.